Hello students, welcome to our channel. So today's our chapter is molecular basis of inheritance. This chapter is totally indicated by molecules. That means your DNA and your RNA. So आज रे chapter रू आमको जानिया को पड़िबो molecule किए and inheritance कौन ए दुटी जिनिस molecule and इनहेरिटेंस ये दुटा जिनस को आमको जाना पड़ो यार ठीक प्रीवियस चैप्टर रे आमे पढ़िथिलु प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन सो सेठी आमे डिस्कस करथिलु इनहेरिटेंस कोन सो द इनहेरिटेंस इज द वर्ड दैट कम्स फ्रॉम इनहेरिट दैट मीन्स टू रिसीव सो ये क्वेश्चन उठुची कौन टा रिसीव करुची किए रिसीव करुची आ काहाटू रिसीव करुची ए तीनटा जिनस हमर क्वेश्चन उठुची किए रिसीव करुची कौन रिसीव करुची आ काहाटू रिसीव करुची ए तीनटा जिनस हमर क्वेश्चन उठुची सो एटी कहा गले रिसीव करुची कौन ना कैरेक्टर काहाटू रिसीव करुची पेरेंट्स टू रिसीव करुची कहा को ट्रांसमिट करुची ना ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट करुची सो जेटा कि सो एटी जो ऑफस्प्रिंग पाखो को कैरेक्टरटा ट्रांसमिट होची सो वर्तमान हमको जाना को पड़िबो ऑफस्प्रिंग कौन ऑफस्प्रिंग होची प्रोडक्ट जी कि कैरेक्टरटा को रिसीव करे कहा पाखरु कहा पाखरु ना हमर पेरेंट्स पाखरु रिसीव करुची सो सिंपली कहा गले इट इज द प्रोसेस और mechanism of transmission of character from parents to offspring or inheritance is the word that transmit the character from one generation to next generation. सो यार ठीक प्रीवियस चैप्टर रे जोटा हमें पढ़िथिलु कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन सेठी किछिटा हमरो प्रिंसिपल आड हेतला जोटा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस ए सब जिंस सेठी आड हेतला सो आज हमें पढ़िबा ना व्हिच बेसिस आज हमें एटी पढ़िबा कोन ना व्हिच बेसिस इज इंपोर्टेंट हियर सो हियर व्हिच बेसिस इज इंपोर्टेंट हियर सो कह गले आमर जो कैरेक्टरटा ट्रांसमिट है जी कि ताको नेकी आसिला जोटा कि ट्रांसमिट करुची गुटे जनरेशन रु नेक्स्ट जनरेशन पाखु को गुटे ऑफस्प्रिंग पाखु को सो एटी क्वेश्चन उठुची व्हिच मॉलिक्यूल फॉर्म द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ताले मॉलिक्यूल को किए नहीं क्या आसुची आ ये मॉलिक्यूलटा केमिति क्या हेल्प करूची हमरो लाइफ रो क्रिएशन पाई
जोटा कि आमर कैरेक्टर ट्रांसमिट पाई मोस्टली एसेंशियल। सो ताहले से मॉलिक्यूलटा कि तो ताहारी भीतर विषय रे आमे आज जानिबु जोटा कि सो आज रे जो चैप्टर molecular basis of inheritance is the chapter that dealing with all about this. So which molecules are present in our cell? एमती कौन गुड़ाए बायोमोलिकुल्स अच्छी जो गुड़ा कि आमर कैरेक्टर ट्रांसमिट पाई मोस्टली एसेंशियल। So here we all know gene is the physical basis of heredity. सो आमे समस्ते जानिछु कि जीन गुटे कौन ना फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी जोटा कि कैरेक्टर ट्रांसमिट पाई मोस्टली एसेंशियल जोटा कि आमे फिजिकल बेसिस बोली कहू। सो वर्तमान क्वेश्चन उठुची जीन इज केमिकली मेड अप ऑफ व्हाट ता माने कहिया को गले जीन रो एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन टा कौन। सो एटा को जानिया पाई बहुत साइंटिस्ट आसिले बहुत वर्ष कला। सो एमती रिसर्च चलतेला। सो द रिसर्च गोइंग ऑन। सो एट लास्ट we all concluded that gene is nothing. It is a segment of DNA. Or a fragment of DNA. Or it is also a piece of DNA. So normally कहा को गले आमर ये DNA टा DNA is a polymer of nucleotide. So gene is chemically composed of your DNA segment and it is present in our cell and that control our several body character and that also transmit parents to offspring. And it is also transmit one generation to next generation. So आम पाखे जो आमर पेरेंटाल कैरेक्टर अच्छी जदि आमको आम पेरेंट्स सहित कंपेयर करा जीवो we all looks like our parents. So कह गले which chemical molecule carries that character from our parents to offspring? So that is nothing. That is our father's DNA and that is our mother's DNA. So it कह गले everything is depend upon our DNA. तामाने सबु किछि हमर DNA ऊपर डिपेंडेड जोटा कि हमर बॉडी कैरेक्टर को कंट्रोल करि पारुची आमको डिफरेंट फंक्शन करि पारुची। तो ये सब जिनस आमर डीएनए ऊपर ही डिपेंडेड। सो फास्ट हमको ये कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा पड़ो देन आम चैप्टर भीतर को जावा। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर that is the molecular basis of inheritance, we will be dealing about the discovery of DNA, then the structure of DNA and also the function of DNA. Then how DNA make a copy of itself. Then DNA replication.
then how DNA search for the genetic material, then also the transcription, then the translation or the protein biosynthesis, that is how to make the protein, etc. So here all this detail we will be dealing about in this chapter. So today we will be focus the discovery of DNA. So it is the big interest among the scientists. So जोटा कि साइंटिस्ट मानक भितर बहुत बड़ इंटरेस्ट आसीगला, जोटा कि वन टाइप ऑफ क्यूरियोसिटी आसीगला. सो से भितर देखा मिलला कि हाउ द डीएनए लुक्स लाइक. सो एप्रति समस्त किसी ना किसी अवदान रहा, जोटा कि गोटे गोटे कंट्रीब्यूशन रहा. बट फॉर द फर्स्ट टाइम द डिस्कवरी ऑफ डीएनए, all the credit goes to Friedrich Miescher. He isolated the term nuclein. That means the DNA with associated protein. केबे करथिले ना हमर 1869 रे फ्रेडरिक मेस्चर नामक जने साइंटिस्ट जे कि हमर डीएनए को न्यूक्लिन बोली नेमिंग कर देथिले. By the profession, Friedrich Miescher was a surgeon, जोटा कि जने ब्रिटिश सर्जरियन बोली तंगु कहा जाए, जे कि वन ऑफ द वेटरिनरी डॉक्टर. सो वन डे ही वाज ड्रेसिंग सम आउल. से कौन करथिले ना किछि आउल मानकर ड्रेसिंग करुथिले. सो आफ्टर ड्रेसिंग से कौन कले ना एटा जो बैंडेज कपड़ा को, जो बैंडेज कपड़ा को रेस्ट जो बैंडेज हो सारी कपड़ा को से कौन कले ना डस्टबिन रे पकई देले. तो से बैंडेज कपड़ा रे किछि पूज ब्लड आदि लगी, जोटा कि हमको कौन कह जाए ना पस सेल बोली कह जाए. सो फ्रॉम दिस डिस्कार्डेड बैंडेज Miescher discovered the structure inside the nucleus and it is called, that is nuclein. At the particular time he called it is the nuclein. बर्तमान आमर क्वेश्चन उठुची कि पस सेलटा ये कि जिनस बा कौन एटा. सो पस सेल इज द डेड डब्ल्यूबीसी, जोटा कि अदरवाइज आम कहीपर ल्यूकोसाइट बोली कहीपर. सो ये आम डीएनए टाकू डेड डब्ल्यूबीसी भितर पाई पारलु. बाकी आमर तो ब्लड रे बहुत प्रकार सेल अच्छी, जोटा कि आमर कह गला आरबीसी अच्छी, ब्लड प्लेटलेट अच्छी, डब्ल्यूबीसी अच्छी. सो ये 3 प्रकार सेल अच्छी. बाकी आम ये ओनली डब्ल्यूबीसी भितर डीएनए टाकू पाई पारुछु. व्हाई नॉट इन द आरबीसी और व्हाई नॉट इन द ब्लड प्लेटलेट. सो यार पर्टिकुलर आंसर होची जेटा कि कह गले मेच्योर आरबीसी दे डू नॉट हैव एनी कैपेसिटी टू कंटेन न्यूक्लियस and also the blood platelet have not capacity to contain nucleus, but the WBC have the capacity to contain nucleus. So here the pus cell contain dead WBC or the DNA. So एटी DNA रो structure सेमिति किछि
ହେଇ ନଥିଲା ବା ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେମିତି କିଛି କେମିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଇନଥିଲା ବା ତା ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ କ'ଣ ୟା ଭିତରେ ସେମିତି କୌଣସି ବେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇନଥିଲା. ସୋ ଦ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୋଇଂ ଅନ୍. ସୋ ଦ ଆଫ୍ଟର 20 years in the year of 1889 year, it is a twist year. The another scientist came. The name is Altman. He is one of the student of Meister. से कौन कहले ना तांकर ये डीएनए विषय किछिटा अवदान रहिला जेटा कि किछिटा गोटे कंट्रीब्यूशन रहिला. से कौन कहले ना आमर डीएनए होची कह गले आमर डीएनए को कहा जाए ना न्यूक्लिक एसिड. Meister called the DNA nuclein, but the Altman, one of the student of Meister, called the DNA nucleic acid. Why? Meister DNA को न्यूक्लिन बोली नेमिंग कले. तार पर्टिकुलर रीजन मेस्चर देथिले कि it is only present inside the nucleus, so it is called nuclein. But Altman changed the term nuclein into nucleic acid. Why? It is a big reason. It is a very big reason. That is, the DNA present inside the nucleus and it is also acidic in nature. So it is called nucleic acid. So it is fundamental ta kaya ku gale DNA is present inside the nucleus and it is acidic in nature, so it is called nucleic acid. बाकी मेस्चर कहले कि it is present inside only in the nucleus, so it is called nuclein. So इथिपाई दी जनकर व्यू अनुसार जोटा कि आमर सेकेंड व्यू थिला अल्टमैन कर इट इज डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड. इट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेड. So you all know today our DNA is nucleic acid. That's all the discovery of DNA.